Hello and welcome, my dear friends. Today we'll talk about another system of naming, that is the IUPAC naming, or we can say IUPAC nomenclature of organic compounds. IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. This is an organization which basically decides things about an organic molecule or any kind of compound in chemistry. So what about this IUPAC naming is basically it is the most rational. IUPAC naming is actually most rational and widely used nomenclature. So widely used naming, or we can say nomenclature, that is the IUPAC nomenclature. The important feature of IUPAC nomenclature of organic compounds is single. There's a single IUPAC name of an organic compound. मतलब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अपना एक सिंगल नाम होता है. That name cannot be for any other molecule. So this is the beauty, or we can say the feature of IUPAC nomenclature. So how do we name an organic compound as far as IUPAC nomenclature is concerned? The name is, so we can write over here, IUPAC name of an organic compound is, so we'll write over here, you have first of all a prefix, then there is word root, then there is a primary suffix, and lastly there is secondary suffix. This is the name of an organic molecule or organic compound. So first of all we have prefix, then you have word root, then you have primary suffix, then there is secondary suffix. अब इनका जिक्र हम करेंगे वन बाय वन, फिर आपको समझ आएगा हाउ डू वी नेम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वर्ड रूट. वर्ड रूट जो है, it is actually basic skeleton of an organic molecule. Basic skeleton. It indicates the number of carbon atoms. It indicates the number of carbon atoms in principal chain. In principal chain. Principal chain here stands for longest chain. Longest chain which you will select. So we will be talking about how do we select the longest chain. तो फिलहाल आप याद रखिए, it indicates the number of carbon atoms. For example, अगर आपके पास कार्बन खाली एक होगा in the principal chain, then it gets the word root as meth. If you have two carbon atoms, it gets the word root as eth. If you have three, it gets the word root as prop. If you have four carbons, it gets the word root as but. Then if you have five carbons, it gets the word root as pent. If you have six carbons, we have hex. Then you have hept. Then you have oct. And then you are having 9 carbons, so name is non. So you have 10 carbons, that is dec. If you have 11 carbons, that is undec. For 12 you have dudec. For 13 you have tridec. For 14 you will be having tetradec. Similarly you will be having pentadec, hexadec, heptadec, etc. Then for carbon 20 you will be having a name, a word root, that is ICOS. So these are basically the word roots
So word root is basic. It basically represents the basic skeleton. It indicates the number of carbon atoms in the principal chain, that is the longest chain. So we have in longest chain, for instance, only one carbon, so it's meth. We have 6 carbons, it gets the word root as hex. We have 11 carbons in the principal chain, we get the name as undec as word root. I hope you understand it, what the word root is. Word root is basically indicates the number of carbon atoms in the principal chain. Now next is primary suffix. So number 2 is a primary suffix. Primary suffix. Word root के बाद एक suffix आएगा, that's called as primary suffix. So what it is, it indicates whether carbon chain is saturated और unsaturated. अगर सैचुरेटेड होगा, इफ सैचुरेटेड मतलब अगर आपकी कार्बन चेन सैचुरेटेड होगी, इट कंटेन सिंगल बॉन्ड्स ओनली, उसमें खाली सिंगल बॉन्ड्स होंगे, अल्केन टाइप होगा. सो द सफिक्स विल बी एन, ANE. नाउ इफ अनसैचुरेटेड, अगर आपकी कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, then you will be having either double bonds or you will be having triple bonds. So what the primary suffixes will be, in case of double bond you will be having a primary suffix of "-ine", and in case of triple bond you will be having a suffix that "-ine". So these are the primary suffixes, that is "-an" in case of single bonds, "-ine" in case of double bonds, and "-ine" in case of triple bonds. And ये जो आप इस्तेमाल करेंगे "-an", "-ine", "-ine", this you will use as primary suffix. This will be after word root. After word root, that is the primary suffix. Now the point is, if you have more than one double bonds, मतलब 2 double bond. अब अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होंगे, so if, ये हम नोट में लिखेंगे, we will write a note over here. If a molecule contains 2 double bonds or 2 triple bonds, अगर मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होंगे या 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, then add A after word root. वर्ड रूट के बाद आपको A ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 कार्बन वाला सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट फर्स्ट. अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें खाली 2 कार्बन एटम है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स. सो द वर्ड रूट विल बी इथ. ठीक, अब वर्ड रूट तो आ गया, द नेम इज वर्ड रूट. उसके बाद आ गया प्राइमरी सफिक्स. सिंस इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वी विल बी हैविंग एन. सो ईथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की, तो इसमें 3 कार्बन्स हैं. सो द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स. सो द वर्ड रूट विल बी prop, because you know here if you have 3 carbon atoms, it's having a word root of prop. Then you have primary suffix. Primary suffix can be either "-an", "-ine", or "-ine", but the point is it contains a double bond over here, so we have the primary suffix as "-ine". So the name of this compound will be propene. Similarly अगर आप इसकी बात करेंगे, now this is the molecule containing 4 carbon atoms in the longest chain, so the word root will be bute. ठीक, अब word root bute है. Now this is basically having alkene, unsaturated system, मतलब डबल बॉन्ड है तो इन आएगा. लेकिन before you put in you are having 2 double bonds over here, so you have to add A after word root. You see here you have to add A after word root, so it will be buta.
then there are two double bonds means diene. So butadiene. So why from comes this A is because this molecule contains two double bonds. So if a molecule contains two double bonds or two triple bonds, you have to add after word root A. So add A after word root. Then you have to write the primary suffix, that will be ene, but how many double bonds are there? Two, so we have diene. This is how you name an organic compound. I'll illustrate a number of examples later on, but prior to that, let me finish up what basically is primary suffix, secondary suffix, and all these. So till now, we basically talked about what a word root is, and then we talked about what a primary suffix is. Now, what do you mean by secondary suffix? Let's talk about this first. So we have the secondary suffix. Number third, secondary suffix. Secondary suffix basically is added after primary suffix. It is added after primary suffix. सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है यहाँ नेमिंग में प्राइमरी सफिक्स के बाद ही आएगा सेकेंडरी सफिक्स. सो इट इज एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स. एंड व्हाट इट इज, व्हाट इट इंडिकेट्स, it indicates the nature of functional group. It indicates the nature of functional group. कौन सा फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में होगा वो इंडिकेट करेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स. सो सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली इंडिकेट्स द functional group, or we can say functionality, and primary suffix indicates the saturated or unsaturated system. Now what the functional groups are, what will be their suffix name we are having here. So first of all, I'll write over here a class. At the top I shall be writing class, मतलब functional group जो है वो किस class से belong करता है, what is that functional group, and what is their what is the secondary suffix name. उस functional group का name क्या आएगा as secondary suffix. So first of all we are having alcohols. So alcohol is the category, a class of organic compounds in which we have the functional group that is OH. जब ये आएगा in molecule तब इसका suffix name क्या बनेगा, all, OL, all. Now we are having one more, that's aldehydes. This is the another class of organic compounds in which we have the functional group C double bond OH. हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये CHO. So we are having its fixed name as al. Now we have the third one, that is ketones. Ketones are having this kind of structure. तो इसका नाम आएगा 1, ONE1 as suffix name. Then you are having carboxylic acids. Carboxylic acids. How it looks, it is C double bond OH as the functional group. So इसका नाम आएगा as oic acid. Oic acid is the suffix name of carboxylic acids. Next we are having acid amides. Acid amides are basically the derivatives of carboxylic acids. So that is C double bond ONH2. So instead of OH we are having NH2 over here, and the name will be amide. This is the suffix name for acid amides. We are having one more that's called as acid halides. This is also the derivative of carboxylic acids in which OH has been replaced by X, that's halogen. So we are having its suffix name as oil halide. Then we have one more, that is esters. Esters are again the derivatives of carboxylic acids in which OH has been replaced by OR. R is the alkyl group, R dash is the alkyl group. So what is its name as suffix? It's O8. But the point is to remember, जो esters का जो R है, alkyl है, it is to be named first. So R dash is named first. R dash पहले उसका नाम आएगा. Then you have the
prefix, then the word root, then the primary suffix, then the secondary suffix as OET. आपको क्या याद रखना है? You have to remember that this is the actual name of organic compound. First of all, there is prefix. We have not talked about this yet. Then you have the word root. We did talk about this, the number of carbon atoms. Primary suffix stands for whether the structure contains unsaturation or saturation. Accordingly, you have an, in, ein. Secondary suffix indicates the functional group present in that molecule. So we have the names. I'm talking about that right now. So, and in case of esters, we have the R dash, that's alkyl group. It is to be named first whenever there are esters. Next we have basically nitriles. That is C triple bond N. We can say cyanides also. तो इसका नाम क्या आएगा? Nitrile आएगा इसका नाम as fixed name. Then you are having actually thioalcohols. The structure is SH. Then you have thiols as suffix name. Amines are the class of compounds in which we have the structure NH2. Then you are having its IUPAC suffix name as amine. I hope you understand this. So these are some of the functional groups whose suffix names I have written over here. In case of alcohols, we have all. In case of aldehydes, we have al. In case of ketones, the structures are these, and these are the names, that's un or one, oic acid, amide, oil halide, OET. And for esters, the R dash alkyl group is to be named first whenever you have to name these compounds. Now we have the last one, that's number 4, that is prefix. So prefix basically indicates the substituent attached to selected chain. So it indicates the substituents attached to selected chain. जो कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जिसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो उस लॉन्गेस्ट चेन में या सिलेक्टेड चेन में या प्रिंसिपल चेन में, उसको हम कभी कभार बोलते हैं फादर चेन भी या मदर चेन भी. सो उसमें अगर सबस्टिट्यूएंट्स आएंगे, कुछ अटैच्ड एटम्स और ग्रुप्स आएंगे जिनको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स. सो वो सबस्टिट्यूएंट्स का नाम जो है, वी यूज दोज नेम्स एज प्रीफिक्सेस. फॉर एग्जांपल, लेट मी हैव एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस इज, अगर आपके पास ये कार्बन चेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दिस इज बेसिकली द कार्बन चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स. It does not have any group attached to this selected chain, so there is no substituent at all. जब substituent है ही नहीं तो आपका prefix भी नहीं आएगा. तो बात डायरेक्टली आएगी word root पे. word root क्या आएगा? एक कार्बन 2 3 4. word root is but plus, then there is all single bonds, तो primary suffix n आएगा, and there is no functional group at all, so the name will be butane. अगर अब ऐसा होगा, if you have this now, CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH3. So if you see this kind of example, now this will be the selected chain of 3 carbon atoms, because 1 2 3 or 1 2 3 1 2 3 यहाँ से भी 3 कार्बन आ गए, यहाँ से भी 3 का, so we'll take only straight chain. You cannot do 1 2 3 and 4 because यहाँ से यहाँ जाने तक कोई बॉन्ड ही नहीं है डायरेक्टली. So you cannot say that it's 1 2 3 and 4, rather it's 1 2 3 connected chain होनी चाहिए. So it's 1 2 3, so ये चेन के बाहर रहा. It's 1 2 3 ये चेन के बाहर रहा. It's 1 2 3 ये चेन के बाहर रहा. So in all the 3 chains we have the 3 carbon atoms, so you will choose this chain 1 2 3. So ये जो alkyl group है, methyl group है, this is away from the selected chain, so this becomes as substituent. So it indicates a substituent attached to selected chain. So ये जो selected chain है उस पे attached ये substituent है, ये group है, this is called as substituent. इसी का नाम जो है वो बनेगा as prefix. अब देखिए इसका नाम क्या आएगा. अब अगर आप नंबर करेंगे इस चेन को, if you number this chain, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So 2 carbon पे methyl group है, so it's 2 methyl. So you have to prefix it. आपने इसको prefix किया, पहले लिखा,
फिर आपका वर्ड रूट आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, देन देयर इज ऑल सिंगल बॉन्ड, सो एन आएगा एज प्राइमरी सफिक्स। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप एट ऑल, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-methyl प्रोपेन। 2-methyl is the prefix. Why? Because this is the group away from the selected chain or attached to the selected chain. This is called as substituent. Substituent जब भी आएगा तो उसको वो बनेगा prefix. So prefix is to be named first. So we have 2-methyl because उसका नंबर जो है 2 पे है, 2-methyl. Then there is word root. Word root contains number of carbon atoms in the selected chain. They are only 3. So we have prop and then all are single bonds, मतलब saturation है तो N आएगा. So 2-methyl propane is the name of this compound. I hope you understand all these 4 terms. The first one is prefix. Prefix indicates the substituents attached to the selected longest chain. Word root represents the number of carbon atoms in the selected or principal chain. Primary suffix indicates unsaturation or saturation, and secondary suffix indicates the functional group present in that molecule. So there may or may not be functional group. Primary suffix will always be there. Word root will always be there because this is the basic skeleton, and prefix may or may not be there. जब होगा तब इसका नाम पहले आएगा. Now you will have to remember certain important points before proceeding to naming organic compounds. So some important points to remember. So हम यहाँ पे लिखेंगे to name an organic compound. To name an organic compound, following points are noted. Following points are noted. So we are having number 1 point. You have to select first of all longest chain. Select the longest carbon chain. So before you name any organic compound, you have to select the longest chain, carbon chain. जब आपने ये चेन सिलेक्ट कर दी, आपको उस चेन को आप नंबरिंग करनी है. So number this chain, number the chain from the side where substituents get lowest number. इसे बोलते हैं हम lowest sum rule. This is called as lowest sum rule. मतलब क्या, उस सिलेक्टेड चेन को फिर आपको नंबरिंग करनी है. नंबरिंग उस साइड से करेंगे आप जिस साइड से आपका सबस्टिट्यूएंट जो है उसका नंबर कम आए. इट विल गेट द लोवेस्ट नंबर. इट विल गेट द लोवेस्ट नंबर. ये आपको अभी समझ में आएगा जब हम एग्जांपल्स की ओर जाएंगे. थर्ड पॉइंट इज आफ्टर नंबरिंग द चेन यू हैव टू आइडेंटिफाई what are the substituents. So identify the substituents and their position number. मतलब जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा था, सबस्टिट्यूएंट या आपने जब सिलेक्ट की थी चेन, फिर आपने नंबरिंग करी थी 1 2 3. सो इस सबस्टिट्यूएंट का नंबर 2 आया. अगर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी 2 आता, सो इट वाज एट योर चॉइस. आप लेफ्ट से राइट करेंगे या राइट से लेफ्ट करेंगे. अब फिर आपने आइडेंटिफाई करा था सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है, और उसका पोजीशन नंबर क्या है, 2 है. वही हमने लिखा यहाँ, आइडेंटिफाई द सबस्टिट्यूएंट and its position number and their position number. जब आपने ये आइडेंटिफाई किया, सो नेम इट एज प्रीफिक्स. नेम इट एज प्रीफिक्स क्यों? बिकॉज सबस्टिट्यूएंट जो है वो उसका नाम प्रीफिक्स ही आता है. नेम इट एज प्रीफिक्स. फिर ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ड रूट आएगा उसका नाम आएगा, देन प्राइमरी सफिक्स का नाम आएगा, देन देयर विल बी सेकेंडरी सफिक्स का नाम आएगा इफ देयर इज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. अब 1-2 चीज़ें और आपको याद रखनी है, वो ये कि जब आप नंबर आएगा, सो प्लेस कॉमा, मतलब ये बिटवीन नंबर्स के दरमियान आपको कॉमा करना है. प्लेस हाइफन, मतलब ऐसे डैश बिटवीन नंबर एंड वर्ड. सो नंबर और वर्ड के दरमियान आपको हाइफन करना है, हाइफन डालना है, और नंबर्स के दरमियान आपको कॉमा करना है. जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिखा था, यहाँ पे तो मिथाइल था, यहाँ पे नंबर था 2, सो नंबर और मिथाइल के दरमियान मैंने डैश कर दिया, मतलब हाइफन कर दिया. सो हाइफन डालना है जब भी नंबर और वर्ड आएगा. अगर 2 नंबर्स आएंगे, नंबर्स के दरमियान आपको कॉमा लिखना है. यू हैव टू राइट कॉमा. सो दीज आर बेसिकली
the points which you have to remember. One more point I should add over here is, if अगर secondary suffix, if secondary suffix मतलब functional group में if secondary suffix begins with vowel, vowel letter, अगर secondary suffix मतलब functional group जो है उसका जो suffix name है वो begin करेगा with vowel letter, then आपको e drop करना है, then drop e of primary suffix. प्राइमरी सफिक्स में जो ई आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, तो इट विल बी इथ प्लस प्राइमरी सफिक्स आएगा, सब सिंगल बॉन्ड्स है तो एन आएगा, एंड इसका आएगा ऑल, क्योंकि बिकॉज इट्स अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल का सफिक्स क्या आता है, ऑल आता है. अब देखिए अल्कोहल में जो O है वो O इज वॉवल, एंड ई जो है ई ऑफ ई, लास्ट वाला ई जो है ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स को ड्रॉप करना है. सो यू हैव टू ड्रॉप दिस, सो द नेम विल बी इथ एंड ऑल विदाउट ई. So this is what we mean here. If suffix, secondary suffix begins with vowel letter, then drop e of primary suffix. Primary suffix का जो e है वो आपको drop करना है. This is important. One more point I should add over here is, for more than one same substituents, अगर एक से ज़्यादा same substituents होंगे, use डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा फॉर देम. अगर डिफरेंट होंगे, फॉर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स नेम देम अल्फ़ाबेटिकली, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. देन वी कैन प्रोसीड टू नेमिंग. सो आई मस्ट रिकैप्चुलेट यू अगेन. To name an organic compound, following points are noted. आपको longest chain select करनी है, आपको जो है उस चेन को फिर नंबरिंग करनी है, लेकिन नंबरिंग उस साइड से करेंगे आप जहाँ सबस्टिट्यूएंट का नंबर कम आए. तीसरी बात क्या है, आपको सबस्टिट्यूएंट अब आइडेंटिफाई करना है वो है क्या और उसका पोजीशन नंबर क्या है. देन यू हैव टू नेम इट एज प्रीफिक्स. तीसरा पॉइंट क्या लिखा आपने, आपको कॉमा डालना है बिटवीन नंबर्स, आपको हाइफन डालना है बिटवीन नंबर एंड वर्ड. अगर सेकेंडरी सफिक्स बिगिन करेगा विद वॉवल लेटर, तो ई आपको जो ई होता है प्राइमरी सफिक्स वो ड्रॉप करना है, जैसे इस एग्जांपल में मैंने दिखाया. नेक्स्ट, अगर एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, यू हैव टू यूज़ डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5. अगर 5 सिमिलर होंगे. अगर डिफरेंट होंगे सबस्टिट्यूएंट्स, तब जो है आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली आप उनको नाम देंगे. So this is all about naming. Now we shall switch to certain examples. So let's take about some examples over here. आपके पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. ये एक कार्बन चेन है, आपको ये सिलेक्ट करनी है. ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड 1 2 3. अब आप इस कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे. सो वी हैव 1 2 3 1 2 3. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ नेमिंग इट. सो वी हैव प्रोप, word root is prop and all are single bonds, तो n आएगा, तो name is propane. Now you are having CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH3. This is the longest chain. उसमें 4 कार्बन है, तो prefix है ही नहीं because there is nothing attached to it, so there will be no substituent at all. Directly आएगा word root. आपको पता है name is prefix plus word root प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये आप याद रखेंगे. तो प्रीफिक्स है ही नहीं इसमें. क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड टू दिस चेन. डायरेक्टली आएगा वर्ड रूट. वर्ड रूट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो 4 है, तो आएगा ब्यूट. नाउ प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट सैचुरेशन अनसैचुरेशन, तो ये सैचुरेटेड है तो एन आएगा, तो इट इज ब्यूटेन. देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप एट ऑल, सो आपका सेकेंडरी सफिक्स बी नहीं आएगा. सो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 single bond CH3. अब आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन. अब देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन बन गई.
1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन बन गई। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये भी 4, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4। सो हर एक साइड से 4 जो आता है और एक साइड से 3 आता है, तो वील यूज द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज दिस चेन, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन। सो इस सिलेक्टेड चेन में जो एक ग्रुप है ये अटैच्ड है, तो दिस बिकम्स एज सबस्टिट्यूएंट। ये जब सबस्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका पोजीशन नंबर आपको पता होना चाहिए, तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से आपका जो सबस्टिट्यूएंट है वो उसका नंबर कम आए। अगर आप यहाँ से करेंगे इट्स 1, इट्स 2 एंड देन इट विल बी 3, तो 3 नंबर आ गया फॉर दिस सबस्टिट्यूएंट। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 और 2, सो 2 ही नंबर आएगा इसका, तो इट गेट इज द लोवेस्ट नंबर वंस यू नंबर फ्रॉम दिस साइड, सो इट विल बी 1, इट विल बी 2, 3 एंड 4. So you number this chain from left to right. Why? Because when you number it from left to right, the methyl group which is a substituent gets the lowest number, that is 3, 2. अगर आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो it will get a number 3, that is the larger number. So you have to remember this point, that you have to number the chain from the side where substituent gets lowest number. कम नंबर आना चाहिए सबस्टिट्यूएंट का, उसी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो द नेम इज, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द सबस्टिट्यूएंट। व्हाट इज द सबस्टिट्यूएंट? मिथाइल। उसका पोजीशन नंबर क्या है? 2 है। जब भी सबस्टिट्यूएंट आता है तो सबस्टिट्यूएंट इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड, ये प्रीफिक्स बनेगा, तो द नेम इज 2 मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, सो इट्स 2 मिथाइल। वर्ड और नंबर के दरमियान आपको हाइफन डालना है, सो 2 मिथाइल। ना वर्ड रूट आएगा, प्रीफिक्स तो हो गया, अब वर्ड रूट है। वर्ड रूट इज 4 मीन्स ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स कितना है? सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन आ गया, सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप एट ऑल, सो देयर इज नो सेकेंडरी सफिक्स एट ऑल। सो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ वी आर हैविंग वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ना ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। देखिए अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये CH3 है, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आती है, तो यू विल बेसिकली सिलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप देखेंगे इस लॉन्गेस्ट चेन में 2 सबस्टिट्यूएंट्स आते हैं। जब सबस्टिट्यूएंट्स आते हैं तो प्रीफिक्स जो है वो बनेगा ही। यहाँ से भी मिथाइल है, यहाँ से भी मिथाइल है। अब आपको नंबरिंग करनी है इस चेन को। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसका 1 आएगा, इसको 2, इसका 3 नंबर आएगा, इसका 3 नंबर और इसका 4 नंबर आएगा। ठीक, अगर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से करने से क्या होगा, इसका नंबर 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। सो इसका 2 ही आता है, इसका 3 ही आता है, सो इट गेट इज द लोवेस्ट नंबर। अगर आप इनको सम करेंगे 3 + 2 = 5, तो लोवेस्ट सम रूल इसका कितना आया? 5 आया सम। अगर आप इसका सम करेंगे 3 + 4 = 7, सो वी हैव टू फॉलो द लोवेस्ट सम रूल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लोवेस्ट सम रूल मतलब जमा करेंगे आप इनको तो लोवेस्ट सम आना चाहिए। लोवेस्ट सम आता है फ्रॉम नंबरिंग दिस वे, सो वी हैव 3 + 2 = 5, सो वी विल यूज द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड राइट टू लेफ्ट। We will use the numbering from right to left, so it will be here 1, it will be 2, it will be 3, it will be 4, it will be 5. Now 2 पे जो है मिथाइल ग्रुप है, 3 पे जो है मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप सेम है, तो वी कैन राइट 2, 3। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नंबर्स के दरमियान आपको कॉमा करना है। नाउ डैश, अब कितने हैं? मिथाइल यहाँ पे भी, मिथाइल यहाँ पे भी, तो डाई आएगा। आई टोल्ड यू इफ वी हैव सबस्टिट्यूएंट सिमिलर देन यूज डाई, ट्राई एक्सेट्रा। वी हैव डाई मिथाइल, डाईमिथाइल। नाउ प्रीफिक्स तो खत्म हो गया, अब वर्ड रूट आ गया। इसमें कितने कार्बन है? 5 हैं, तो पेंट आएगा वर्ड रूट। नाउ ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो एन आएगा, तो वी हैव 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन एज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी विल प्रोसीड फर्दर ऑन टू अदर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब इट, शेयर इट, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक बटन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।